are going to start with the next chapter of snapshots. That is chapter 2, The Address, written by Marga Minko. So today in this video, we are just going to deal with the introduction, that what the story is all about. We will deal with the characters, themes, and from the next class, from the next video, we will deal with the explanation part of the text. So let's start with the chapter. First, we will read about the writer, that is Marga Minko. Marga Minko is a Dutch journalist and author. She lives and works in Amsterdam. Next, we will move to the introduction. We will read the first point. The story is about the human predicament. Predicament, it means a difficult situation that follows the pre-war and post-war period. So इस स्टोरी में हम ह्यूमंस के डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड दिस स्टोरी इट फॉलोज बिटवीन द वॉर पीरियड एंड आफ्टर वॉर पीरियड. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जब वॉर चल रहा था उस समय कैसा सिचुएशन था एंड आफ्टर वॉर इस स्टोरी में सिचुएशन कैसे थे. Mrs. S, who was a Jew, was a rich lady. Mrs. S, she is the character here, okay? Whereas Mrs. Darling was a non-Jew. The girl, daughter of Mrs. S, had lost her house and her mother during the war, and now she had decided to come back to take her possessions. Possessions, it means belongings. From Mrs. Darling, an acquaintance. Acquaintance, it means relative, whose address was given by her mother years ago. So यहाँ पे हम three characters को देखते हैं. That is Mrs. S, then Mrs. Darling, and the third one is daughter of Mrs. S. So ये जो story है वो war period के समय का है. The story is during World War II and the war was going on between Germany and Holland. And Mrs. S, her daughter, she lives in Holland. And in this war, Germany invades Holland. Germany जो है वो Holland को क्या करता है, वो capture कर लेता है. In the story, we will read about humans' difficulty during war period and after war period. So यहाँ पे हम देखते हैं कि Mrs. S जो है, जो कि एक rich lady है, वो अपना सारा पोजेशंस दैट इज बिलोंगिंग्स वो मिसेस डॉर्लिंग को दे देती है. क्यों देती है? बिकॉज शी इज हर एक्वेंटेंस, राइट? क्योंकि वो उनकी रिलेटिव है, इसीलिए वो अपना सारा बिलोंगिंग्स जो है बहुत साल पहले बिफोर वॉर से पहले जब वॉर चलने वाला था वो उसी समय अपना सारा बिलोंगिंग्स मिसेस डॉर्लिंग को देती है. जब वॉर स्टार्ट होने वाला था तब वो अपना सारा सामान देती है ताकि मिसेस डॉर्लिंग उसे सेफली अपने घर पे रख सके. देन आफ्टर वॉर हम क्या देखते हैं, दैट द डॉटर ऑफ मिसेस एस, शी लॉस्ट एवरीथिंग. शी लॉस्ट हर हाउस, शी लॉस्ट हर मदर ड्यूरिंग दैट वॉर. एंड अब वो डिसाइड करती है कि जितनी भी बिलोंगिंग्स जो उनकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दिया था वो सारा चीज़ अब वो वापस ले आए. नेक्स्ट वी विल मूव टू दी second point. When she reached the house, the woman treated her with a cold reception and didn't let her into the house. She decided to go back anyway, and then she met her daughter, who let her in and told her to wait inside. When she saw all the possessions in front of her, she couldn't connect with them and decided to leave the house. So after the war, when the daughter of Mrs. S, she lost everything. What she decided? She decided to take back all her possessions from Mrs. Darling. वो decide करती है कि उनका जो जितना भी सामान था, जितने भी उनके belongings थे, वो Mrs. Darling से क्या करेगी, वो वापस ले लेगी. So she reached her house. She reached Mrs. Darling's house. But when she reached there, मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बहुत ही कोल्डली उन्हें ट्रीट करती है. मिसेस डॉर्लिंग शी ट्रीटेड मिसेस एस डॉटर वेरी कोल्डली. वो बहुत अच्छे से उसे ग्रीट नहीं करती है, बहुत वार्मली उसका वेलकम नहीं करती है. एंड हियर वी सी दैट मिसेस डॉर्लिंग डिडंट लेट
daughter of Mrs. S to enter her house. वो मिसेस एस की डॉटर को अपने घर पे घुसने भी नहीं देती है. Then the daughter of Mrs. S, she decided to go back from that place. But later, when we'll read the story, we will see that after some period of time, she again went to that house. And there she met Mrs. Darling's daughter. And her daughter, she let her in that house. वो मिसेस डॉलिंग की जो डॉटर है वो मिसेस एस की डॉटर को घर के अंदर लेके आती है एंड वो बोलती है कि आप यहाँ पे बैठ के वेट करो. सो व्हेन द डॉटर ऑफ मिसेस एस शी एंटर द हाउस, वो वहाँ पे अपना सारा बिलोंगिंग्स को, अपने सारे सामान को देखती है. एंड जिस कंडीशन में वो अपने बिलोंगिंग्स को वहाँ पे देख रही है, शी इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम एंड शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल with the environment, with the atmosphere of that house, and then she decided to leave the house. So here in the story, what we are going to read, we are going to read about war period, before war period and after war period. Here we are going to read about the three characters, though I'll give you the detail of the characters. Some characters introduction आपको बताएंगे, but here in the introduction part what we see that there are three characters, that is Mrs. S, Mrs. Darling and Mrs. S daughter, right? And here in second point we see that there is one daughter of Mrs. Darling also. So हम इस स्टोरी में देखेंगे कि Mrs. S जो है वो अपनी सारे बिलोंगिंग्स को मिसेस डॉलिंग को दे देती है बिकॉज शी इज हर रिलेटिव. वो उसे सेफली रखने के लिए देती है. क्यों देती है? क्योंकि ये वॉर का टाइम है एंड दिस वाज द रीज़न कि वो अपनी सारी चीज़ों को मिसेस डॉलिंग को रखने के लिए देती है. उन्हें लगता है कि मिसेस डॉलिंग उनके सामान को बहुत ही सेफली, बहुत ही अच्छे से रखेगी, बहुत प्रोटेक्टिव वे में रखेगी. एंड आफ्टर वॉर जब मिसेस एस जो है उनका डेथ हो जाता है, अब मिसेस एस की जो डॉटर है वो अकेले हैं. शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग. वो अपना घर खो देती है, वो अपनी मदर को खो देती है. और उसके बाद जब वो मिसेस डॉलिंग के पास जाती है ये सोच के कि वो उसे पहचानेगी, उसे ग्रीट करेगी, उसे वेलकम करेगी, बट जब वो मिसेस डॉलिंग के घर पहुंचती है तो वो बहुत ही कोल्डली रिएक्ट करती है. वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो मिसेस एस की डॉटर को पहचान ही नहीं रही एंड वो उसे घर भी घुसने नहीं देती. बट लेटर इन द स्टोरी वी सी डैट कि नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से मिसेस डॉलिंग के घर जाती है तो मिसेस डॉलिंग की डॉटर उसे ग्रीट करती है, उसे अंदर घुसाती है एंड मिसेस एस की डॉटर को बोलती है कि आप यहाँ पे बैठ के वेट कीजिए बिकॉज माई मदर इज नॉट हियर. एंड at that time, Mrs. S daughter, what she saw her things in that house, and just condition में वो अपनी belongings को वहाँ देखती है. After that, after seeing all the things, वो वहाँ से क्या decide करती है? She decided to leave that house. Next, we will deal with the theme. So, what is the message that we get from this story? The story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, she leaves everything behind as it could not bring her dead mother back. She decides to move on and live with only memories of the former times. The address that held so much importance till she visited that place lost its value and the girl realized that it could get her nothing but pain. So here the first theme that we see is that the girl, she decided to move on. Move on, it means कि वो बहुत चाहती थी, right? She was in search for all the belongings of her mother. But later when she visited that place, when she reached Mrs. Darling's house, जब वो उनके घर पहुंचती, मिसेस डॉलिंग के घर पहुंचती है, जिस कंडीशन में वो वहाँ पे अपने बिलोंगिंग्स को देखती है, आफ्टर दैट शी डिसाइडेड टू मूव ऑन. वो क्या सोचती है
वो सोचती है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें उनकी जो डेड मदर है उसे वापस नहीं ला सकती। एंड जिस कंडीशन में वो उन सारे सामान को वहाँ पे देखती है, शी डिसाइडेड टू मूव ऑन, बिकॉज ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उन्होंने खोई है इस वॉर में, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग हर मदर बैक। एंड ये सारी चीज़ें उसे क्या दे सकती है, बस पेन दे सकती है। सो यहाँ से हम एक पॉइंट ये सीखते हैं कि अगर हम अपने पास्ट को होल्ड करके रखते हैं, वी कैनॉट गो बैक टू आवर पास्ट, राइट, हम अपने पास्ट में नहीं जा सकते हैं। बट वो सारी चीज़ें हमें क्या देती है, वो सिर्फ हमें पेन देती है अगर हम अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके रखते हैं तो। So the best thing that we learn from here is that everyone should move on in their life. अगर ये अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है, अगर वो एकदम डिटरमिन हो जाती है कि अगर नहीं, मुझे ये सारे सामान को लेके ही जाना है, ये जिस भी कंडीशन में, दो इट वाज, आई थिंक दैट इट वाज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, राइट, तभी तो वो उन सारी चीज़ों को देख के उसका जो मूड है वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ओवर देयर। तो अगर वो ये सोचती कि नहीं, मुझे वो सारे सामान को लेके ही जाना है, दो इट वॉज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, तो वो सारी चीज़ें उसे क्या देती, सिर्फ और सिर्फ पेन देती। वो बार बार उन चीज़ों को वहाँ पे देखती कि वो प्रॉपर वे में नहीं है, कुछ भी चीज़ वेल मेंटेन्ड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसे क्या देती, सिर्फ और सिर्फ पेन देती। हियर द डॉटर ऑफ मिसेस एस, she decided to move on from that place, move on from those belongings। वो सारी चीज़ों को वो वहीं छोड़ती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी with the memories of a mother। Next point here we see the story further brings to light as soon as we accept something and move on in life, the better we are bound to feel। Accepting something not only makes us feel better emotionally, it also helps us to concentrate on the opportunities that might come our way in the not so distant future। So this was the thing which I was talking about, that कि हम अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में अगर हम मूव ऑन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, ये सारी चीज़ें हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। अगर हम अपने पास्ट को ही होल्ड ऑन करके रहेंगे तो ना ही हम अपने फ्यूचर में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ना हम अपने प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल message that we are getting from this story, that we should move on, we should not hold our past। हमें अपने पास्ट को पकड़े नहीं रहना चाहिए। अगर हम उसे पकड़े रहेंगे तो हम क्या होगा कि हम ना अपने प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और ना ही हम अपने फ्यूचर में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आएगा हम उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। So this is the very best message, the very good message that we are getting from this story. Next point we will see. The story depicts the complex human emotions of intimacy, trust, hope, and betrayal. It speaks of the greed and vices that afflict a human being and how it makes them do horrible things like breaking other people's hopes, lying, stealing, cheating, etc. Mrs. Darling refuses to return what she took from her friend and do her duty as a friend and responsible human being. She actually used the opportunity to take advantage of her friend's difficult circumstances. This represents the worst of human nature. The background of war and persecution of innocent lives has strong connotations and beautifully foreshadow the story itself. So यहाँ पे हम एक और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो क्या है, that we human beings, हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में पढ़ने को मिलता है, दैट इज इंटीमेसी, ट्रस्ट, होप एंड बिट्रेल। We trust upon someone, right? We have a great bonding with some people. We have hope over some people. जब हमारा बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा होप लगा के रखते हैं। एंड हेयर ऑल्सो सेम थिंग हैपन। मिसेस एस
बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग शी वॉज हर फ्रेंड, शी वॉज हर ओल्ड एक्वेंटेंस. तो वो क्या कहती है कि दे हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग, उन दोनों के बीच में ग्रेट बॉन्डिंग था. एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसेस एस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी. मिसेस एस शी होप्ड डैट मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उनके हर एक बिलोंगिंग को बहुत अच्छे से रखेगी, क्योंकि ये वॉर पीरियड था, वॉर का टाइम था. एंड दिस वॉज द रीज़न कि वो अपना सारा बिलोंगिंग्स जो है वो उन्हें दे देती है. बट मिसेस डॉर्लिंग व्हाट शी डिड, शी बिट्रेड मिसेस एस. एंड वो कैसे बिट्रे करती है, वो अपनी फ्रेंड दैट इज मिसेस एस के डिफ़िकल्ट टाइम, जो उनका जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसका वो क्या करती है, वो एडवांटेज लेती है. एडवांटेज लेके वो सारा बिलोंगिंग्स अपने घर पे ले आती है. वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारे सारे सामान को बहुत अच्छे से रखूँगी. एंड वो बिट्रे कैसे करती है, जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है तब वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती. सो दिस इज बिट्रे. सो हियर इन दिस स्टोरी में हम ह्यूमन नेचर के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा होता है. सो व्हाट पीपल डू, जो लोग होते हैं वो ग्रेट बॉन्डिंग होने के बावजूद भी दे बिट्रे, राइट, वो बिट्रे कर देते हैं, वो धोखा दे देते हैं. एंड ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब इंसान का बुरा वक्त चलता है. हियर we see that Mrs. S, she was in a very difficult situation, she was in a very difficult time because of this war. क्योंकि वॉर का समय था, वॉर का टाइम था, वॉर पीरियड था, वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में थी. एंड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल हर बिलोंगिंग्स, राइट. एंड इस स्टोरी में हम एक ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा है एंड कैसा होता है, कैसे लोग जो हैं वो लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं एंड जैसे उनका काम निकलता है वो क्या करते हैं, वो बिट्रे कर देते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टू characters. So here there are 4 characters. The first one is the daughter. Here we are talking about daughter of Mrs. S. So she is the narrator. Daughter of Mrs. S, she is the narrator and she is narrating the entire story. Alright? She is the narrator who returns to Holland to go to the address where her mother's precious belongings were kept. So daughter of Mrs. S, she is the narrator and she returns to Holland after war. वॉर ख़त्म होने के बाद वो हॉलैंड वापस जाती है टू द एड्रेस. यहाँ पे किसके एड्रेस के बारे में बात हो रही है, द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. एंड दिस एड्रेस वॉज गिवन बाय मिसेस एस टू हर डॉटर. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस एस, द narrator's mother. In this story, the narrator's mother has been called as Mrs. S. So Mrs. S, she is narrator's mother. Next is Mrs. Darling. She has been described as an old acquaintance of Mrs. S. So Mrs. Darling, she is the friend of Mrs. S. And Mrs. S, as in the story we see that she has given all her possessions, all her belongings to मिसेस डॉर्लिंग. उन्होंने अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को रखने के लिए दिया था बिकॉज शी होप्ड एंड शी बिलीव्ड दैट मिसेस डॉर्लिंग वुड कीप ऑल हर बिलोंगिंग्स सेफ एट द टाइम ऑफ वॉर. एंड द लास्ट वन इज अ गर्ल ऑफ 15. एंड हु इज शी? शी इज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. So today in this video we have done the introduction part. We have dealt with the characters theme, and from the next class, as I have already told you, that we will deal with the explanation part of the text. So for the next class, be prepared with your book and write the notes that I am giving you today. Maintain your note copy. Alright? So that's all for today's